Hello everyone, welcome to our channel. As we know, at present time, many students wants to study an English medium, whether it's current affairs or history of any state, GK, general studies subjects, but they can't find out the proper or real material for their preparations. So we want to start a new initiative to help them. Hope you like it. In today's video, we will talk about history of Haryana, the meaning of the state, its divisions and subdivisions, municipalities, wildlife reserves, and many more things. Let's find out what we have for you. First, meaning of Haryana. The name of Haryana has been derived from the Sanskrit words Hari and Ayana. Hari means the Vishnu, the god Vishnu, and Ayana means home. The whole meaning is the abode of God. The abode of God means the home of God. Now, history of Haryana. After revolt of 1857 on 13th April 1858, Haryana, then known as Delhi Territory, was merged with Punjab province. During the British colonial period from 1858 to 1947, it was administered as a part of the Punjab province. It became a separate administrative entity in 1966. The state Haryana, administrative in 1966. Chandigarh becomes the joint capital for the states of Punjab and Haryana. देखिए, हरियाणा राज्य जो है वो अलग किया गया था पंजाब से, पंजाब रियासत से। उस टाइम पे हरियाणा और पंजाब दोनों एक ही थे, पूरा प्रांत था। फिर उसको अलग किया गया था और दो स्टेट्स बनी थी, एक पंजाब और एक हरियाणा 1966 में, और चंडीगढ़ इनकी जॉइंट कैपिटल बनाई गई थी। नेक्स्ट, भगवत दयाल शर्मा बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। हरियाणा के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Who was the first chief minister of Haryana? Mr. Bhagwat Dayal Sharma. Dharamveer became the first governor of Haryana. Next, who was the first governor of Haryana? Dharamveer. Next, geography of Haryana. Area of Haryana 44,212 kilometers square. It is ranked 20th in terms of area with less than 1.4% of India's land area. According to area, Haryana state is on 20th rank. In traditional Indian geography, it falls under the North Indian zone. Haryana is geographically divided into 5 features. ज्योग्राफिकली यानी कि अगर इसकी हम भूगर्भीय स्थिति को देखें तो ये 5 फीचर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ शिवालिक, सेकंड प्लेन्स, थर्ड द फुट हिल्स ऑफ माउंटेन्स, फोर्थ द अरावली रेंज एंड सेमी एरिड एरियाज. Plain areas. The plain areas are formed by the doab of important rivers and are fertile in nature. The major plains are Yamuna Ghaggar Plain, consist of Satluj Ghaggar Doab, Ghaggar Hakra Doab, and Hakra Yamuna Doab. Next, Shivalik Hills. The north area is covered with Shivalik Hills. The north area of state Haryana is covered with Shivalik Hills, which consist of deciduous forest. In Haryana, the highest peak of Shivalik is Karho. The important question, highest peak of Shivalik. Which is the highest peak of Shivalik? It's Karho.
1514 meter in height. Shivalik area is in Panchkula, Ambala and Yamunanagar. शिवालिक हिल्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जो हिमालय है, हिमालय का सबसे साउदर्न जो पार्ट है उसे हम शिवालिक हिल्स के नाम से जानते हैं. The city of Panchkula is inhabited on the foothills of Morni Hills. The foothills of mountain 25 km width area is in Panchkula, Ambala and Yamunanagar is known as foothills of mountain. Aravali Range. The southern region is covered by Aravali Range which borders the Rajasthan state. Highest peak of Aravali Range in Haryana, Kutajpur in Dhosi Hills. Highest peak of Aravali Range in Haryana वो है कुतजपुर in Dhosi Hills. Semi-arid area. The semi-desert dry sand plain called Bhagar Tract covers the southwest part of the state. Next, Haryana Hills and Ranges. The biggest and highest hills or some important hills of Haryana. Shivalik Range. Shivalik Range is present in north part of Haryana. Shivalik Range, North Haryana. Aravali Range, southern part of Haryana. Morni Hills, इम्पोर्टेंट है ये. मोरनी हिल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है. मोरनी हिल्स इज़ इन पंचकुला डिस्ट्रिक्ट, ओनली हिल स्टेशन इन हरियाणा. डोसी हिल्स इन महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट. एक्सटिंक्ट वोल्केनोज इन हिल्स के अंदर पाए जाते हैं डोसी हिल्स में. नेक्स्ट, तोशाम हिल्स. तोशाम हिल्स इन भिवानी. रिवासा हिल्स, महेंद्रगढ़ एंड कलियाना हिल्स, चरखी दादरी, रॉकिंग स्टोन. Next point is districts, divisions and municipal corporation in Haryana. How many districts are in Haryana state? There are 22 districts, 6 administrative divisions, 72 subdivisions, 93 revenue tehsils, 50 sub-tehsils, 140 community development blocks, 9 municipal corporations, 58 municipalities and 6,841 villages in Haryana state. This data is according to 2011 census. 6 administrative division, 22 districts and 72 subdivisions. Next, area-wise. Area-wise, the largest district of Haryana, which is the largest district of Haryana, Sirsa, and the smallest one is Faridabad. The biggest assembly of Haryana in area, Loharu, and the smallest one is Balramgarh. The largest tehsil in Haryana in area, Charkhi Dadri, and the smallest tehsil, Panchkula. These are some important questions. Which is the largest district of Haryana? Which is the largest tehsil in Haryana? And the biggest assembly of Haryana? Next, forest and wildlife sanctuaries. The Haryana state of North India has 2 national parks, 8 wildlife sanctuaries, 2 wildlife conservation areas, 4 animal and bird breeding centers and 1 deer park and 50 herbal parks. देखिए इनके बारे में नेशनल पार्क कौन से हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है या हर्बल पार्क्स कौन से, कंजर्वेशन एरिया, वाइल्ड लाइफ, इनके बारे में हम अलग से एक वीडियो डालेंगे. अभी सिर्फ कुछ जो कॉमन बातें हैं उनकी बात कर रहे हैं हम इस वीडियो में. नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अबूब शहर is one of the biggest wildlife sanctuary of Haryana. Which is the biggest wildlife sanctuary of Haryana? Aboob Shahar. And
Smallest sanctuary of Haryana is Chilchila. Forest cover is in the state. Forest cover 3.59%. ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि जो फॉरेस्ट कवर है इंडिया में वो सबसे कम हरियाणा स्टेट में ही है। तो वो कितने एरिया पे है या कितना फॉरेस्ट एरिया इसके अंडर आता है। 3.59% एरिया फॉरेस्ट से पूरा कवर है। एंड अगर वैसे लैंड की हम बात करें तो 1586 किलोमीटर स्क्वायर में टोटल फॉरेस्ट एरिया है। लार्जेस्ट एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट इन हरियाणा। लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया covered by forest in Haryana, Panchkula district, and smallest area covered by forest in Haryana, Palwal district. Largest lake in area. Largest lake in area is Damdama Lake, 3000 acres, and it is in Gurugram. काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन एरिया इन हरियाणा, दमदमा लेक। एंड क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि विच लेक इज़ फाउंड इन गुरुग्राम, विच इज़ लार्जेस्ट इन एरिया। अगेन द आंसर इज दमदमा लेक। नेक्स्ट, प्रोविंशियल सिंबल्स ऑफ हरियाणा। प्रोविंशियल सिंबल्स मीन्स राजकीय चिन्ह या राजकीय जो संकेत होते हैं हरियाणा के वो कौन से हैं। प्रोविंशियल लैंग्वेज हिंदी, प्रोविंशियल गेम रेसलिंग, प्रोविंशियल बर्ड ब्लैक फ्रेंकॉलिन, प्रोविंशियल एनिमल ब्लैक बक, प्रोविंशियल ट्री सिकर्ड फिग पीपल ट्री, प्रोविंशियल फ्लावर लोटस। I repeat it. Provincial language Hindi, provincial game wrestling, provincial bird black francolin, provincial animal black buck, provincial tree sacred fig, and provincial flower lotus. Boundaries of Haryana. Haryana is bordered by 5 Indian states. Or how many states share their boundary with Haryana? The answer is 5 states and 1 union territory. 5 states are Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh and Rajasthan. आप इसके साथ में देख रहे होगे कि उत्तराखंड सबसे कम अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है 11 किलोमीटर स्क्वायर ओनली। राजस्थान सबसे ज़्यादा लंबी अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है, वो है लगभग 1262 किलोमीटर स्क्वायर। पंजाब स्टेट टचेस बाय 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला एंड पंचकुला। Next, Himachal Pradesh state touches by 3 districts of Haryana, Panchkula, Ambala and Yamunanagar. Uttarakhand touches by only one district and only 11 kilometers square, Yamunanagar. Uttar Pradesh touches by 6 districts of Haryana, Yamunanagar, Karnal, Sonipat, Panipat, Faridabad and Palwal. Rajasthan touches by 7 districts, Sirsa, Fatehbad, Hisar, Bhiwani, Mahendragarh, Rewari and Nuh. Haryana also surrounds Delhi Union Territory on 3 sides, forming the northern, western and southern border of Delhi. Rohtak and Charkhi Dadri doesn't share their boundaries with any other state of India. Name 2 districts which doesn't share their boundaries with any other state of India. Rohtak and Charkhi Dadri. Yamunanagar touches the most 3 states. Which district touches the most states? Yamunanagar
and states are Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Uttar Pradesh. Last but not least, Jind is known as Heart of Haryana. Which district is known as the Heart of Haryana? Jind. These are some important questions, and I request you, please keep a pen and a diary with you, because there are many important points जो हमें याद नहीं रहते, एक टाइम पे हम भूल जाते हैं. तो whenever we have to revise it, we just open our diary and do it. So आई रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियोस के साथ अपनी डायरी रखें, अपना पेन रखें, और जो भी मैं बोल रही हूँ कि यार ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, आप उन पॉइंट्स को नोट करते जाओ. जैसे आपके पास अपने खुद के एक नोट्स होंगे, आपके पास अपना खुद का स्टडी मटेरियल होगा. फ्यूचर में आपको जब कभी भी रिवीजन करना होगा तो इजी रहेगा, आपको इधर उधर किसी अदर सोर्स या किसी बुक में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. And thank you.